You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about MEG 08 New Literature in English. अब आपने कहा सर इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन से टॉपिक्स हमें ऑन टिप करना है. सर टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास ग्रेन ऑफ बी, A Dance of the Forest, The Ice Candyman, A House of Mr. Viswas, Poetry, The Solid Mandela, and last and not the least, that is the Solid Angel. So the Solid Angel is a stone angel, not solid angel. by राइटिंग मिस्टेक हो गई सीरियसली मेरे दिमाग से. तो यहाँ आपने कहा सर हम लिखते गए हैं और समझते गए, दो चीज होती है. तो यहाँ हमने कहा इसको हम करेंगे स्टोन एंजल. तो क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किनको क्लियर करना है. दिस रियली इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू. तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो इनसे अलग आपको करने, रियली इनसे अलग आपको करने, आपको ऑन टिप होनी चाहिए सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. The beginning. Is new literature in English different from the Commonwealth literature? Explain. The very first question मतलब आपको on tip होना चाहिए. Yes, this is all are in your notes. आपके notes में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, कोई डालने की जरूरत नहीं है. You do have everything in that. So the first, is the new literature in English different from the Commonwealth literature? Explain. The second one that is really important on paper is बनाने की कोई chances है. The diaspora has contributed to the rise of the post-colonial theory. The diaspora. What is the diaspora? होता क्या लिखते हैं. मतलब when you move from one place to another, migrate होते हो, उसके बाद आप लिखते हो, तो कहीं ना कहीं glimpse of your own nation, your own country, your own land being reflected in your writing. उसको होता है diaspora. The diaspora has contributed to the rise of post-colonial theory. Explain. Next one. Write a note on the origin and development of Caribbean literature. Caribbean literature, new literature in English. तो कहीं ना कहीं Caribbean literature का पार्ट है जिसको डिफाइन किया गया. वी गाइस नीड टू नो दिस आंसर. नेक्स्ट वन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन. आई रिपीट, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन राइटिंग इन द न्यूली एमर्जिंग लिटरेचर. रोल ऑफ वुमेन राइटिंग इन न्यूली एमर्जिंग राइटिंग. नेक्स्ट वन, discuss the factors that led to the evaluation of the distinct variable Caribbean culture. Yes, I repeat the question. Discuss the factors that led to the evaluation of the distinctive Caribbean culture. Next, to the last but important one. What are the implications of the term dark in expression of the dark contribution as applied to Africa? I repeat. What are the implications of the term dark in the expression of the dark continent as applied to Africa? तो पहला टॉपिक है ग्रेन ऑफ व्हीट. अब सर हमें ग्रेन ऑफ व्हीट से कौन से क्वेश्चन करने हैं. यहाँ पे बच्चे में से पूछते हैं सर कौन सा करें कौन सा छोड़ दें. चॉइस तो मैं बताता हूँ भाई. देखो, The Ice Candyman, A House of Mr. Viswas, Solid Mandela and The Stone Angel. इनको मत छोड़ना, बाकी चॉइस आप है. इनको मत छोड़ना किसी भी हाल में. जहां पर the question number 1, a grain of wheat. सर कितने क्वेश्चन को? 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4. इन 4 को बोलो कुछ करने जरूरत नहीं. Would you agree that the John Thompson, I'll repeat, would you agree that the John Thompson in A Grain of Wheat represent the colonial point of view? Yes, he represent the colonial point of view. Colonial point of view क्या है, उसको कैसे क्लियर करता है, किन चीजों को फॉलो करता है, वो हमें क्लियर करना है. Give a reason. Give a reason in your answer. Next, discuss the title of the novel A Grain of Wheat with a special reference to Nagoy Wothong's use of Christian mythology. Yes, Christian mythology. उसने Christian mythology को highlight किया. Along with his writing, he had mentioned lots of things that is really important to understand. Jump up to the next part. That is, write a critical note on thematic concerns in A Grain of Wheat. Thematic concerns in Grain of Wheat. Yes, you guys need to write out this answer in a proper way. Why did Thong choose resistance to colonization as a theme of this novel? Resistance to colonization as a theme of this novel. A Grain of Wheat. Discuss. So these are the questions that you guys need to prepare from A Grain of Wheat. Now there are lots of other questions too that you guys need to know. तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मेरी इंस्टा ID @classicwayoflearning पीछे देख रहा है आपको, उसको फॉलो कर लेना इमीडिएटली. खाली इस पेपर नहीं, बाकी सारे पेपर्स के भी एक्सपेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. जंप अप टू द नेक्स्ट स्टोरी. दैट्स अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट. मेरी अच्छी स्टोरीज में से एक है डांस फॉरेस्ट. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल रूल्स. यस, द डबल रूल्स played by Dimok, Lola और Agborega, etc. in a dance forest. तो उनके जो डबल रोल है उनको पूरा पूरा कमेंट करना, उसको क्लियर करना आपने. नेक्स्ट वन, एग्जामिन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट एज presenting issues of Nigerian independence.
Yes, they are present in the issue of Nigerian independence. Next one. Comment on the two time frames. I repeat. Comment on the two time frames and the play within the play. Two time frames and the play within a play in a whole solanke's dance of the forest. Yeah, a dance of the forest. This is really important and I want you guys to do this. Come up to the next story, one of the most dominant one. That is Bapsi Silva's work, Ice Candyman. 100% का क्वेश्चन पेपर होता है 100%. Discuss the various political connotation in the novel Ice Candyman. Political connotations. You guys need to mention this in the Ice Candyman. Next one. Discuss Bapsi Silva's use of English language in the novel Ice Candyman. How does she mold it to suit the contest? उसको कैसे मोल्ड किया ताकि सूट करे कॉन्टेस्ट को पूरा होगा, वो पॉइंट हमें क्लियर करना है. देन डिस्कस द इशू ऑफ आइडेंटिटी. यस, डिस्कस द इशू ऑफ आइडेंटिटी विद द रेफरेंस टू द वुमन कैरेक्टर इन आइस कैंडमन. दैट यू नीड टू एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड गो विद डिटेल, चाहे वो नैनी है चाहे वो हमारे पास राइटर है. डिस्कस द इशू ऑफ आइडेंटिटी विद द रेफरेंस टू वुमन कैरेक्टर इन आइस कैंडमन. द लास्ट क्वेश्चन. The Ice Candyman is an autobiographical novel. Yes, it is an autobiographical novel. Discuss the special reference to Bapsi Silva's stitches as Parsi woman from the third world. Yeah, she is the Parsi woman from the third world. अब उसको कैसे क्लियर किया, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, इनको हाईलाइट किया, कौन कौन से बेसिक्स हमें पूरे फॉलो करने, वो यहाँ बताने आप. Jump up to the next story. Again, the easiest and the most important one, A House for Mr. Biswas. Yes, A House for Mr. Biswas. Examine the use of irony and humor in A House for Mr. Biswas. Irony and humor in the story House for Mr. Biswas. The house, I repeat, in A House for Mr. Biswas indicates different states. A house in A House for Mr. Biswas indicates different states of mind that conflict with one another. Yes, house in A House of Mr. Biswas indicate different ideologies. उस पर कमेंट करना आपने. Next one. Attempt an analysis of the Naipo's A House of Mr. Biswas, the diasporic novel. Again, diasporic concept में पहले क्लियर कर दिया था. उसको बताना है आपने नायपोल के नॉवल में. That is A House of Mr. Biswas. उस कॉन्सेप्ट को बताना है, diasporic concept को. Discuss the significance of Hanuman House in Naipo's House of Mr. Biswas. The Hanuman House, तुलसी हाउस, दोनों इंपॉर्टेंट है यार. पोएट्री सेक्शन गिनती के 4 क्वेश्चन कर लो. पोएट्री में कुछ नहीं करना आपने, सीधे से कुछ नहीं करना. आरटीसी नहीं आती पोएट्री में, इस पेपर में आरटीसी नहीं आती. कहता वॉलकॉट पोएट्री एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. यस इट डू. तो वॉलकॉट पोएट्री एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. डिस्कस. नेक्स्ट वन. इज द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. आंसर द रेफरेंस द डायरेक्ट वॉलकॉट पॉइंट. नेक्स्ट वन. Write a note on the oral rhythm. Yes, write a note on the oral rhythm employed by Kamo Bethel in the poem Wings of a Dog. Wings of a Dog. And the next one, discuss Bethwaite's Resting's analysis of Jamelin society in a Wings of a Dog. तो हमें वो पूरा बताना है, and we guys need to explain this in the detail from the beginning till the last. Next one, the solid mandala. The themes of the novel are reflected by the characters in the solid mandala. The themes of the novel are reflected by characters in the solid mandala. Discuss how does mandala motif work in a Patrick White's The Solid Mandala. किस तरह डिफाइन करता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. You need to explain this. Next one. How does the mandala motif work in different ways at the level of theme and structure in the novel The Solid Mandala? Should I repeat this question? हाँ, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा. हाउ डज द मंडेला मोटिव वर्क इन डिफरेंट वेज. उसका मोटिव कैसे डिफरेंट वेज में काम करता है एट द लेवल ऑफ थीम एंड स्ट्रक्चर इन द नॉवल द सॉलिड मंडेला. नेक्स्ट वन. एनालाइज द यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल. द यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल इन पैट्रिक वाइट्स द सॉलिड मंडेला. नेक्स्ट, लास्ट नॉट द लीस्ट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन पैट्रिक वाइट्स द सॉलिड मंडेला. कैरेक्टराइजेशन पे काम करना है आपको इन द सॉलिड मंडेला. Come on, next one, the stone angel. Yes, you guys need to clear the stone angel. क्या है stone angel, कैसे क्लियर करते हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं. Does Hagar Shipley ever come to terms with a guilt complex? वो क्या अपने guilt complex से बाहर आया तो कैसे है उसको डिफाइन करना है.
Does Hagar's Shipley ever come to terms with her guilt complex? Discuss the reference to the stone angel. Yes, she's the protagonist of the story, Hagar. उसी के चारों तरफ पूरी स्टोरी घूम रही है beginning से last तक. What role does the stone angel in the novel the same name fulfill? Stone angel किसको signify करती है? क्या fulfill करती है? वो सारी चीजें बतानी है आपने. कहता is the self-elimination of the Hagar Shipley in Margaret Lawrence the stone angel as consequence of pride and her religious background. This is the most expected question. Discuss. What is the significance of the past for the Hagar in a stone angel? The role of past in her life. And the last not the least, what are the main thematic concerns in the stone angel? तो ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं for your upcoming exam for MPG 08 4 दिसंबर टी. So guys, make sure that you won't miss any. इनके ऊपर काम करेंगे पूरा. कोई दिक्कत आती है, let me know through the comment box. Those who want to join the crash course, definitely crash course is being started. You can join now. Wish you all the best.